Bismillahirrahmanirrahim. Today we will discuss about balancing chemical equations and we will balance a polyatomic equation. So we will write left hand side and this one is right hand side. Here one thing should be kept in mind. In polyatomic equation, these ions are considered to be one thing. For example, we have Ca on this side, Ca1. Here on this side, Ca is also 1. Now we come to sulfate, SO4. So we have one SO4 on the left hand side and SO4 on the right hand side is also 1. Now we come to Na. So here on the left hand side Na is 1, while on the right hand side Na 2 items. So there are 2 items on the Na on the right hand side and 1 on the left hand side. Now we come to NO3. So here we have one NO3 on the left hand side, while NO3 on the right hand side are 2. So we count the number of atoms on both the sides. So as we already said that these sulfate SO4 NO3 SO4 they are considered one thing as we counted it in this counting. So now we want to balance the equation. So here on the left hand side we have one Ca atom is 1, and on the right hand side Ca atom is also 1. So this is balanced. Here on the left hand side sulfate is 1, on the right hand side SO4 is also 1. Now we come to Na. Here Na is equal to 1. We have 1 Na on the left hand side and 2 on the right hand side. So first we will balance NO3. As there is 1 NO3 on the left hand side and there are 2 NO3 on the right hand side. So we will multiply this by 2, so it will become 2. So now NO3 became equal on both sides. We will write this coefficient 2 before Na. So now as NO3 become equal on both sides, but this affected Na as we have 2 Na. So now we have Ca1 on the left hand side as well as on the right hand side. This is balanced. We have SO4 1 on the left hand side and also on the right hand side it is 1. अभी
ये 2 बन गई. This became 2 as we multiplied in NO3 by 2. So this also became 2. So now Na on both the sides are balanced. So the equation is now balanced. Again we want to count to check. We have 1 Ca, here we have 1 Ca. Here SO4 is 1. On the right hand side SO4 is also 1. Na we have 2 Na on the left hand side and 2 on the right hand side. NO3 we have 2 NO3 on the left hand side and NO3 have 2 on the right hand side. Now the equation is balanced. So the balanced equation is CaSO4 plus 2Na NO3 Ca NO3 whole 2 plus Na2 SO4. The balance equation is CaSO4 plus 2NaNO3 which forms CaNO3 whole 2 plus Na2SO4. So the equation is now balanced. हम अब उर्दू में डिस्कस करेंगे. We have this equation CaSO4 plus NaNO3 जो CaNO3 whole 2 plus Na2SO4 बनाते हैं. तो पहले हम ये काउंट करेंगे. तो ये बात याद रखना चाहिए कि ये जो है ना SO4 NO3 SO4 ये एक चीज़ काउंट करते हैं. तो हम पहले इस साइड पे नज़र डालेंगे. हमारे साथ Ca जो है ना 1 है. इस तरह सल्फेट जो है ना 4 है. Na जो है 1 है. NO3 जो है वो 3 है. राइट हैंड साइड पर Ca 1 है, SO4 1 है, Na 2 है और NO3 वो 2 हैं. तो हम इक्वेशन बैलेंस करने के लिए पहले हम Ca बैलेंस करेंगे. तो ये पहले से बैलेंस है. इस लेफ्ट हैंड साइड पर 1 है और राइट हैंड साइड पर भी 1 है. सल्फेट भी लेफ्ट हैंड साइड पर 1 है और राइट हैंड साइड पर भी 1 है. ये बैलेंस है. अभी इन्हें हमारे साथ इस साइड पे 1 है, इस साइड पे 1 है और राइट हैंड साइड पे 2 है. राइट हैंड साइड पे 2 है. NO3 इस साइड पे जो है 1 है और इस साइड पे 2 है. तो पहले हम NO3 बैलेंस करेंगे. यहाँ 2 है राइट हैंड साइड पर और लेफ्ट हैंड साइड पर 1 है. तो हम 2 से ज़रब देंगे तो ये 2 हो जाएंगे. तो 2 इस साइड पे है लेफ्ट हैंड साइड पर अब और राइट हैंड साइड पर भी 2 है. तो ये बैलेंस है. अभी इन्हें इस साइड पे 2 है. यहाँ भी ये जो कोएफिशिएंट है 2 का NO3 का हम यहाँ इन्हें से पहले लगाएंगे. तो ये इन्हें अभी 2 हैं. तो ये 2 है. तो ये 2 हुए और इस तरफ भी 2 है. तो ये बराबर हुई.
इस तरह सी ए बराबर SO4 बराबर है दोनों साइड पे, Na बराबर है दोनों साइड पे, NO3 बराबर है दोनों साइड पे। अब इक्वेशन हमारे साथ बैलेंस है, तो बैलेंस इक्वेशन इस तरह लिखा जा सकता है CaSO4 + 2NaNO3 जो फॉर्म बनाती है CaNO3 + Na2SO4। Please subscribe the channel. Thanks.